तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसको देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस पे होने वाला है। और इस कैनवस का साइज जो है दोस्तों आप लोग देख सकते हो 1x1 फीट का है। और यहाँ पे भाई बहुत सारे कैनवस है, यहाँ पे देख सकते हो 6 कैनवस मैंने रेडी करके रखा है अभी। और इस 6 कैनवस के ऊपर दोस्तों बैक टू बैक वीडियोस होने वाला है। तो वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग दोस्तों कमेंट पे जरूर बताना कि नेक्स्ट जो ड्रॉइंग है वो किस पे बनाया जाए। तो आप लोग कमेंट पे जरूर बताना, उसमें मैं एक चूज करूंगा, उसके बाद ड्रॉइंग को बनाऊंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा क्रीपी होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ड्रॉइंग करने वाला हूँ हगी वगी को। और हगी वगी जो है एक गेमिंग कैरेक्टर है, पॉपी नाम करके एक गेम होता है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्रीपी है, बहुत सारे लोगों को यार हंसी भी आ सकता है। तो दोस्तों बोरिया बिस्तर बांध के आप लोग रेडी हो जाओ। और वीडियो को अभी तक भाई लाइक नहीं किया तो जल्दी से करो लाइक और कमेंट, क्योंकि वीडियो बस शुरू होने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कैनवस के ऊपर मैं आउटलाइन को पेंसिल का यूज करके नहीं बनाता हूँ। तो आप लोग मेरे पिछले वाले वीडियोस को भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने कलर का यूज करके ही बनाया है जो भी आउटलाइन मैंने बनाया है। और ये वाला आउटलाइन भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा ईजी है, तो आप लोग भी कलर का यूज करके बना सकते हो। और आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होता है तो आप पेंसिल का यूज करके भी बना सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कलर वगैरह मैंने सब कुछ ले लिया है यहाँ पे। और ये जो है दोस्तों एक टाइल्स का टुकड़ा है, इसके ऊपर मैं कलर को मिक्स करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो बेसिक जो हमारा आउटलाइन है वो बन चुका है। और अभी जो डिटेलिंग पार्ट है वो कलर के बाद ही होगा। तो चलो अभी कलर को करते शुरू। You in my sight, I keep all the words you said to me. I'll get you, get you, get you, get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, get you, get you, now you beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I don't hear you say you're sorry. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. With you, I cried with you, now wanna be alone. I lied for you, I tried for you, you wouldn't play alone. I got you in my sight, I keep all the words you said to me. I'll get you, get you, get you, get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, get you, get you, now you beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I don't hear you say you're sorry.
push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये वाला जो ड्राइंग है दोस्तों किस तरीके से मैंने आउटलाइन को बनाया है, उसके बाद कलर को किया है, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हर एक आर्टिस्ट यार अलग अलग तरीके से एक्रिलिक कलर को करते हैं, तो मैंने जिस तरीके से आप लोगों को दिखाया है वो मेरा स्टाइल है। तो इस वीडियो से दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। मैं 2000 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि कॉमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे करूँ। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। till I wear the crown.